This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, and this is your Ielts listening session. And before I start my listening session, I'm gonna explain you something very important. जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म की एक्सेस मिल जाती है। जिन बच्चों को अब तक नहीं मिली है, अपने 6,000, 7,000, 10,000, 13,000 रुपए जमा करवा चुके हैं, 18,000 जमा करा चुके हैं, वो जो है वो इसका आईडी मुझे अपनी जीमेल की आईडी फॉरवर्ड कर दे, उनको इसकी एक्सेस मिल जाएगी। आज आपका मिस गुस्सा के साथ सेशन हुआ था, वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। कितनी क्विक सर्विस चल रही है माशाल्लाह। मिस साइमा के साथ एक सेशन हुआ था, अपलोड हो चुका है। ठीक है, अभी सर जावेद के साथ एक सेशन था, आप लोग ले नहीं सके, वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। नोट्स भी अवेलेबल है, आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वार्म अप सेशन, राइट, लिसनिंग विद एसकेएच, ये नई अपडेट आई है। मैं लिसनिंग जो पढ़ाता हूँ, आज का सेशन मेरा हो रहा है लिसनिंग पार्ट 1 में आ जाएगा। जब जब मैंने आपको पार्ट 1 में प्रॉब्लम आ रही है, जाइए पार्ट 1 मेरे लेक्चर सुनिए। आपको पार्ट 2 में प्रॉब्लम आ रही है, पार्ट 2 के लेक्चर सुनिए। मैप्स में प्रॉब्लम आ रही है, मैप्स के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर सुनिए। पार्ट 3 में प्रॉब्लम है, जाकर सुनिए। तो ये मेरी कल की वर्किंग है जो मैंने अपडेट कर दिया, बच्चे मांग रहे थे तो मैंने अपडेट किया। ठीक है, और स्पीकिंग के अंदर जो सेशंस मिस सारा के हो रहे हैं वो भी अपलोडेड है। इससे पहले मिस इरम पढ़ा रही थी, उनके भी लेक्चर्स अपलोड है। आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पार्ट 2 के अंदर बोलना होता है। बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, आप इनको सुनेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, मॉक टेस्ट होते हैं स्पीकिंग के, मिस आफिया आजकल कंडक्ट कर रही है मॉक टेस्ट 8 से 9 में, तो उनके सेशंस भी यहाँ पर अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। आज हम लिसनिंग पार्ट 1 पे जा रहे हैं, बुक 14 को फॉलो करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो कि पार्ट 1 को कैसे 10 आउट ऑफ 10 पर लाना है। आज 2 मेरे साथ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अरे रुक तो जाइए, उसके बाद 2 आप लोग मॉक टेस्ट पे करेंगे। तो मिनी मॉक होगा आपका। ठीक है, आपको गूगल क्लासरूम की एक्सेस मिलती है जब आप अपनी प्रेपरेशन सेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। ठीक है, और ये 3 मंथ्स तक आपके पास रहती है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब ये देखिए बेटा, आपके पास ये पार्ट 1 है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। जब पार्ट 1 आपके पास आता है तो आपसे क्या क्या पूछा जाता है पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 में क्या क्या पूछा जाता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखें, आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, वैसे तो आपसे नाम पूछा जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, सर नाम हम कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें। पहला नाम देखो, लुइस टेलर, पहला जो लेटर है उसको कैपिटल में लिखेंगे आप। जो पहला आपका लेटर है वो कैपिटल में लिखिए, बाकी स्मॉल में। सारे जवाबात पेंसिल से लिखने होते हैं। अच्छा, कोई एड्रेस आ गया तो भाई पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स को सही आ रही है? इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर, इट इज ऑडिबल। ओके, बतूल बेटा अपना नेटवर्क चेक करें। नेटवर्क सना बीच में डाउन होता है, आवाज चली जाती है। हमारा तो नेटवर्क इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सही है। नेम, एड्रेस, लोकेशन। अच्छा, लोकेशन के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। क्या ट्रिक है? एट, इन और ऑन। आप डैश से पहले देखिएगा ये लिखा हुआ हो, एट, इन और ऑन। ठीक है, आपसे और क्या पूछा जाता है लोकेशन के बाद? कोई अमाउंट पूछा जाए और उसमें वहां पर क्या लिखा होगा? डॉलर। पाउंड्स का मेरे पास यार सिंबल नहीं है, यहाँ पर मैं कहाँ से लाऊं? नीचे देखो, वहां पाउंड्स का सिंबल तुम्हें 4 में नजर आ रहा है। कोई अमाउंट पूछा जाएगा, आपसे टाइम पूछा जा सकता है। टाइम, लोकेशन, टाइम, अमाउंट, एड्रेस, नेम। यहां पर आपसे नेशनैलिटी भी पूछी जा रही है। आपसे यहाँ पर और क्या पूछा जा सकता है? कोई टेलीफोन नंबर। मैं इसको नंबर भी लिख दूं अगर सिर्फ, तो याद रखिए कोई जैसे पीओ बॉक्स नंबर,
नहीं, स्मॉल में रुबाब बेटा स्मॉल में लिखता है, सब स्मॉल में, सब स्मॉल में लिखे। बस मैंने बताया कोई प्रॉपर नाउन है तो आप पहला लेटर कैपिटल करेंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा बीच में कोई वर्ड आ रहा है, आप सब स्मॉल में लिखें, ठीक है। और सबसे आसान तरीका बताऊं, जो आपकी आंसर शीट्स होती है ना बुक के एंड में, आप देख एक दफा उसको बैठ के देख ले, आपको खुद समझ आ जाएगा जवाब कैसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, आपसे डेट पूछी जा सकती है। ये वो कॉमन बातें मैंने आपको बता दी जो हर पेपर में रिपीट हो रही होती है। कभी कभार डेट ऑफ बर्थ भी आ जाती है, कब, या मैं इसको यूं लिख देता हूँ, कभी कभार एज आ जाती है, कभी कभार वो आपसे कलर पूछ लेते हैं, कभी कभार वो आपसे साइज पूछ लेते हैं, कभी कभार वो आपसे टेम्परेचर पूछ लेते हैं, है भाई। कलर, साइज, टेम्परेचर। कभी कभार आपसे स्पीड पूछ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास नोट कर लेना। पार्ट 1 में आपको दो लोगों की बातों को सुनने को मिलेगी। पार्ट 1, 2 persons आर टॉकिंग। कोई फॉर्म होगा, फॉर्म होता है कोई, 2 persons आर टॉकिंग, 2 persons। पार्ट 1 7 मिनट का होता है। बुक 14 का टेस्ट 1 और टेस्ट 2 मेरे साथ करो, 3 और 4 असाइनमेंट ले लो। जो लोग अपना पार्ट 1 मुकम्मल कर चुके हैं, अब उनके आज के मिनी मॉक के अंदर 10 out of 10 आने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे पार्ट 1 कर चुके हैं, पूरा एक हफ्ते में पी जाते हैं पार्ट 1, ठीक है। आए जिन एकेडमिक वाले खास तौर पर, जो वार्म अप वाले उनको अभी पीना है स्ट्रॉ लगाकर आज से, ठीक है। पीर मंगल बुध, यार देखो अगर अभी तक नहीं पिया है, जो एकेडमिक वाले बैठे जिनको मैंने आज स्पेशली इन्वाइट किया हुआ है, और वो तो बेटा आज से नियत कर लो, मैं नियत करती हूँ पार्ट 1 को स्ट्रॉ लगाकर पूरा पीने की। मंडे बुक 14 नोट कर लो, मंडे, आज मंडे बुक 14 आज हम करा देंगे आपकी, ठीक है। कल क्या करेंगे आप लोग, ट्यूसडे है, कल क्या करेंगे आप लोग, बुक 15। वेडनेसडे को क्या करेंगे, बुक 16। थर्सडे को बुक, सर कितनी देर लगेगी, हार्डली 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 आधा घंटा। अच्छा, फ्राइडे बुक 18, रहने दो, बुक 18 आई नहीं, बुक 11। सैटरडे बुक 12। संडे बुक 13। हो गई, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दिस इज हाउ यू हैव टू फॉलो दिस रोड मैप। स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। पार्ट 1 की तैयारी इस हफ्ते बिल्कुल वाइंड अप कर दी, और पार्ट 1 में 10 out of 10 आते हैं, आपको भी 10 out of 10 लेने हैं। आइए मेरे साथ साथ अब सुनेंगे हम, और फिर आगे चलेंगे। आपके जवाब चैट्स में मैं पढ़ता हूं, तो आप लोग अपने जवाब चैट्स में लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लिया है, आगे चलते हैं। Number of different recordings. अच्छा, अब एक और अपडेट कर दूं आपको। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, लुइस टेलर। आपको मुख्तलिफ रिकॉर्डिंग सुनेंगे। There is an example which has been done for you. Only on this occasion, recording will be played once again. अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्ट शुरू हो जाएगा वो। आपको नेशनैलिटी बतानी है, देखिए नेशनैलिटी बतानी है, करंट एड्रेस बताना है, यहाँ पर बाय एंटी। अच्छा, बाय की जगह दूसरा वर्ड बताओ क्या आएगा। जो भी डैश से पहले वर्ड होता है उसकी जगह सिनोनिम लिखता है वो। बाय की जगह पर क्या होगा, बाय परचेज। वेरी गुड आयशा, छा गई आप। अपार्टमेंट का नाम बताना है आपको। यहाँ पर वो कहते हैं वॉलेट कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली, उसके उसमें कितने पैसे थे और इसका क्या खोया है भाई, जो जो चीजें चोरी हुई है, और डेट बताइए, ठीक है। चलो, साथ साथ जवाब चैट में लिखिएगा, हम देखेंगे कितने बच्चों के सही। And you will have to answer questions on what you hear. Your name? Louise Taylor. The woman's. Yes, I'm an interior. Right, so I'll need to take a few. Listen carefully and answer questions 1 to 3. आवाज सही आ रही है आपको?
Good morning. What can I do for you? I want to report a theft. I had some things stolen out of my bag yesterday. I'm sorry to hear that. Right, so I'll need to take a few details. Can I start with your name? Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. And your date of birth? December 14th, 1977. So you're just visiting this country? That's right. Yes. Nationality क्या लिखी है आप लोगों ने? Very good. Very good, Sabra. Very good. Marzia, very good. Kursia, that's great. Khadija, छा गई आप. जबरदस्त. सबको ने सुन लिया. ठीक है. अच्छा, किसी को नहीं समझ आया तो वो क्रॉस लगा सकता है. उसके पास एक ऑप्शन होता है रिपीट का. देखिए आपके पास एरोज है. रिपीट करें सर. मेरे नहीं समझ आई सर जी. सर जी क्या कहा उसने. ये सबको आ जाना चाहिए था. बहुत आसान. चले दोबारा चलाते हैं. एक बच्चे की खातिर दोबारा. I start with your name. Louise Taylor. Okay, thank you. And are you resident in the UK? No, I'm actually Canadian, though my mother was British. And your date of birth? December 14th, 1977. So you're just visiting this country? That's right. I come over most summers on business. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture, antiques, you know? There are some really lovely things around here. एंटीक को दूसरे अल्फाजों में क्या कहते हैं? एंटीक जो होता है वो दूसरे अल्फाजों में ओल्ड होता है. ओल्ड, उसने एंटीक की जगह क्या बोला? ओल्ड. जो भी डैश से पहले होता है वो कभी नहीं बोला जाता. एंटीक उसने बाद में बोला. पहले उसने बोला ओल्ड और उसके बाद उसने क्या बोला? 5 लोगों के जवाब आ गए. वेरी गुड सना, वेरी गुड आयशा, वेरी गुड आमना, वेरी गुड और वेरी गुड मर्जिया. चैट में लिखने की आदत डालें. चैट में लिखे, स्पेलिंग भी सही लिखे. पता चले आपकी स्पेलिंग कहाँ है. लिखेंगे तो स्पेलिंग सामने आएगी. बताऊंगा. ठीक है. वेरी गुड आयशा, वेरी गुड कुर्सिया. दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट. चल जबरदस्त. Now listen. And I went into a supermarket to buy a few things. Some details of the theft. So you said. And answer questions 4 to 10. To find another one. Okay. I've had a really good trip this year until this happened. I'm an interior designer, and I come over to buy old furniture, antiques, you know? There are some really lovely things around here, but you need to get out to the small towns. I've had a really good trip this year until this happened. Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments that's on King Street. I was staying at the Riverside Apartments on the same street, but the apartment there was only available for 6 weeks, so I had to find another one. Okay. And the apartment number? 15. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. यस. 3 का जवाब आपने क्या लिखा? वाह भाई वाह. 3 जवाब आए मेरे पास. 3 मुख्तलिफ जवाब. 4 हो गए माशाल्लाह. और ये 5वां जवाब भी आ गया. लो भाई, तीसरे नंबर में समझ नहीं आया सर. दोबारा. अरे सीधा सीधा अपार्टमेंट का नाम बताना था ना. दोबारा सुनो. The apartment there was only available for 6 weeks, so I had to find another one. Okay. And the apartment number? 15. Right. Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments that's on King Street.
I was आपको अपार्टमेंट का नाम बताना, उस पर स्ट्रीट तो नहीं लिखना है ना, आपको सिर्फ अपार्टमेंट का नाम चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट तो एक सड़क बता दिया आपने, अपार्टमेंट का नाम क्या है? दोबारा सुन लो। trip this year until this happened. Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. आप गौर से सुनना। So may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments that's on King Street. वेरी गुड सना, वेरी गुड मर्जिया, वेरी गुड आयशा। बेटे सबरा, ये तो स्ट्रीट का नाम बता रही हो, उससे पहले सुनो ना। वेरी गुड मरियम। Trip this year until this happened. Okay. So you've been here quite a while? Yes, I'm here for 2 months. I go back next week. So may I ask where you're staying now? Well, at present, I've got a place at Park Apartments. क्या बोला उसने? कौन सा अपार्टमेंट्स? कौन सा अपार्टमेंट्स? अब आया ना, पार्क अपार्टमेंट्स, PARK, पार्क, P for पप्पू। That's on King Street. I was staying at the Riverside Apartments on the same street, but the apartment there was only available for 6 weeks, so I had to find another one. Okay. And the apartment number? 15. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. अब गौर से देखो क्या पूछ रहे हैं वो। Now listen and answer questions 4 to 10. Now, I need to take some details of the theft. So you said you had some things stolen out of your bag? That's right. And were you actually carrying the bag when the theft took place? Yes, I really can't understand it. I had my backpack on, and I went into a supermarket to buy a few things, and when I opened it up, my wallet wasn't there. And what did your wallet have in it? Well, fortunately, I don't keep my credit cards in that wallet. I keep them with my passport in an inside compartment in my backpack, but there was quite a bit of cash there, about 250 pounds sterling, I should think. I withdrew 300 pounds from my account yesterday, but I did a bit of shopping, so I must have already spent about 50 pounds of that. Okay. At first I thought, oh, अच्छा आपने देखा, बदतमीजी देखी आपने। अब पहले तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बोल क्या रही है। 215 बोल रही है, 250 बोल रही है, फिर वो कहती है 300, फिर कहती है वो 50। अब समझ नहीं आ रहा बाबा लिखे क्या। तो ये चीज बहुत कॉमन है आपके पेपर में। आपको बहुत तवज्जो से सुनना है कि उसके वॉलेट में पैसे कितने थे। ठीक है, चले दोबारा सुनिए। quite a bit of cash there, about 250 pounds sterling, I should think. I withdrew 300 pounds from my account yesterday, but I did a bit of shopping, so I must have already spent about 50 pounds of that. Okay. At first I thought, oh, I must have left the wallet back in the apartment. But then I realized my phone had gone as well. और क्या क्या चला गया इसका? दूसरी चीज क्या गई वॉलेट के बाद? फोन भी चला गया। पैसे कितने गए? 250। अली बेटा देखो यही प्रॉब्लम आती है, 215 बोला या 250 बोला, बस यही
आपको नंबर की प्रैक्टिस करनी होती है कि 215 या 250, ये जानबूझ के ऐसा वर्ड बोलते हैं कि वो बच्चा गलती करे। आप डेट बताइएगा। It was only a week old, and that's when I realized I'd been robbed. Anyway, at least they didn't take the keys to my rental car. Yes. So you say the theft occurred yesterday. Yes, So that was September the 10th? And do you have any idea at all of where or when the thing? हाँ भाई, डेट क्या बताइए उसने? सितंबर 10। डेट लिखने का भी एक फॉर्मेट है, वो आपको बताऊंगा किस तरह से डेट लिखी जाती है, ठीक है? Things might possibly have been stolen? well, at first I couldn't believe it because the bag had been on my back ever since I left the apartment after lunch. It's just a small backpack, but I generally use it when I'm traveling because it seems safer than a handbag. Anyway, I met up with a friend and we spent a couple of hours in the museum. But I do remember that as we were leaving there at about 4 o'clock, a यस, लोकेशन क्या थी, कहाँ थी ये? अपनी दोस्त के साथ। फिर ये जब वहां से निकली, यानी कि व्हेन आई वाज लीविंग, इसका मतलब है व्हेन आई वाज आउटसाइड द डैश एट अबाउट 4 PM। म्यूजियम की स्पेलिंग आपको आनी चाहिए। वेरी गुड, जबरदस्त। group of young boys ran up to us, and they were really crowding around us, and they were asking us what time it was. Some boys asked for the dash, they ran off। ये पाकिस्तानी लड़के लग रहे थे मुझे। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हुआ है? क्यों तुम्हारे पास घड़ी नहीं है क्या? Some boys asked for the dash। वेरी गुड। ask for the, दोबारा सुन लो। A couple of hours in the museum. But I do remember that as we were leaving there at about 4 o'clock, a group of young boys ran up to us, and they were really crowding around us, and they were asking us what time it was. Then all of a sudden, they ran off. Can you remember anything about them? The one who did most of the talking was wearing a t-shirt with a picture of something. Let's see. A tiger. Right. Any idea of how old he might have been? Around 12 years old? And can you remember anything else about his opinion? अच्छा, अब देखिए, जवाब पूछा नहीं है, टाइगर तो लिखा हुआ है, तो टाइगर क्यों लिख रहे हैं भाई? टाइगर तो लिखा हुआ है। आपको यहाँ पर बालों का कलर बताना है। He was about 12, slim build with dash hair। टाइगर हेयर, जवाब ये लिखा है। सोच रहे, ठीक है ना? ये गलती होती है कि हम टाइगर तो वहां लिखा हुआ है, आपको कलर बताना है। Appearance. Not much. He was quite thin. Color of hair? I do remember that. He was blonde. All the यस, ये ब्राउन कहाँ से आ गया? अभी तो ब्राउन बोला ही नहीं उसने, ठीक है ना? वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नाम नहीं लूंगा मैं, आप ये इसीलिए चैट सिर्फ मुझे दिखती है। आप गलती करें, आपकी गलती पे पर्दा हम डालेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब ये ब्लॉन्ड की स्पेलिंग सुनिएगा कौन कौन सी आ रही है। BLUND, BLOND, मुझे भी, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई कौन सी सही है। BLONDE, लिखे लिखे। अब आपको 3 ऑप्शन दिए हमने, BLOND, BLUND और BLONDE, ठीक है? अभी आप चेक कीजिएगा कौन सी स्पेलिंग सही है आपका। अब रेफरेंस नंबर आपको सुनना है गौर से। others were dark-haired. And any details of the others? Not really. They came and went so quickly. Right. So what I'm going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So this is 10 digits, 87954-82361. Thank you. अब देखते हैं ये कितने लोगों का सही है। आधे ही लिखा है, दोबारा सुन लो, चलो एक दफा और सुन लो। The others? Not really. They came and went so quickly. Right.
So what I'm going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So this is 10 digits, 87954-82361. Thank you. So should I? अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे वो बोलता है, ये नहीं कि सुने अभी पहले, अगर आप ये सुनते हुए सुनेंगे उसके बाद लिखेंगे, कभी भी लिख सकते हैं। जैसे वो बोलना शुरू करे, आपका पेपर पे हाथ चलता हुआ हो, पेपर पे हाथ चलता हुआ हो, दोबारा ट्राई कीजिएगा। पेंसिल आपके हाथ में हो, आप चैट कर रहे हैं तो आप पेपर पे लिखें, फिर बाद पेपर पे आप पेंसिल से लिखें, देखें, दोबारा ट्राई करें। Play. Right. So what I'm going to do now is give you a crime reference number so you can contact your insurance company. So this is 10 digits, 87954-82361. Thank you. याद नहीं करना है, साथ साथ लिखना है। याद नहीं करना है, साथ साथ लिखना है। याद करेंगे तो हमेशा गलती करेंगे। ठीक है, चलो आगे अपने आंसर्स चेक करें। चेक योर आंसर्स। ब्लॉन्ड की स्पेलिंग देख ले, BLOND भी सही है और BOLONDE भी सही है, लेकिन जो स्पेलिंग आई थी BULUND बिल्कुल गलत। 250 10 सितंबर लिखने का तरीका देख ले, TX लगाना चाहे लगा दे, आपकी मर्जी, हटाना चाहे आपकी मर्जी। म्यूजियम की स्पेलिंग, अपना रेफरेंस नंबर 10 आउट ऑफ 10। बेटा अभी आप ना, अभी कहा, अभी तो अब आएंगे 10 आउट ऑफ 10। अभी देखते हैं। अब जो मैं टेस्ट करवा रहा हूँ उसमें सिर्फ मैं गाइड करूंगा, फिर आप लोग सुनेंगे, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, मैंने बता दिया। पहले में देखो क्या लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर। बेटा पेंसिल ले लो, चैट में नहीं लिखना, वो काम करो जो पेपर पे करना है। जल्दी पप्पू से, जल्दी से बुलाओ, पप्पू को आवाज दो, पेंसिल दे दो जल्दी से, और पेन दे दो, पेपर ले आओ, 1 से लेकर 10 तक नंबर डालो, वो काम करो जो पेपर पे करना है। कॉन्टेक्ट नंबर लिखे पेपर पे, डेट ऑफ बर्थ लिखे पेपर पे, ऑक्यूपेशन क्या क्या हो सकता है आपको पता है, क्या हो सकता है ऑक्यूपेशन, टीचर हो सकता है, राइटर हो सकता है, डांसर हो सकता है, मोबाइल स्नैचर हो सकता है, बैंकर हो सकता है, सिंगर हो सकता है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम चाहिए। अब देखें, ये ऊपर क्या है, हेल्थ क्लिनिक है। अब कहाँ पर दर्द हो रहा है, हमारी लेफ्ट क्या है, बताओ लेफ्ट क्या क्या है हमारी। सर लेफ्ट किडनी भी हो सकती है, लेफ्ट हेड भी हो सकता है, लेफ्ट आर्म भी हो सकता है, लेफ्ट लेग भी हो सकता है, लेफ्ट नी भी हो सकती है, लेफ्ट, और क्या हो सकता है डॉक्टर, लेफ्ट शोल्डर भी हो सकता है, लेफ्ट आई भी हो सकता है। वेरी गुड, ऐसे वर्ड्स भी आ रहे हैं जो अपने सुने नहीं। ठीक है ना, कॉमन वर्ड्स लिखे बेटा, डॉक्टर पूरे प्योर डॉक्टर आ गए। ठीक है, अच्छा, बिलोंग टू अ डैश क्लब, वो क्लब का नाम आपको बताना है। व्हेन इट बिगेन डैश अगो, बताओ क्या लिखोगे। 1 मंथ आ सकता, टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, डैश अगो। व्हेन इट बिगेन, व्हेन टॉक्स अबाउट टाइम, तो आपको टाइम लिखना है। 6 तक बिल्कुल हलवा चल रहा है, देखो बिल्कुल हलवा चल रहा है, जो सर ने आपको बताया है वैसे बिल्कुल वही चीज आ रही है। कॉन्टेक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऑक्यूपेशन, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, आपका डेजिग्नेशन, वो पूछा जा रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कब हुआ, टाइम आ गया। आगे देखिए, स्पोर्ट्स प्लेड, बिलोंग टू अ डैश क्लब, क्लब का नाम, गोज डैश रेगुलरली, स्पोर्ट्स, हम साइकिलिंग कर सकते हैं रोजाना, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। इंजर्ड है डैश लास्ट ईयर, अब इसने लास्ट टाइम क्या इंजर्ड किया था, सोचिए क्या पूरे जिस्म में कहाँ कहाँ इंजरियां हो सकती है, आप सुनिएगा और लिखिएगा। और नीचे देखें, नो रेगुलर मेडिकेशन अपार्ट फ्रॉम डैश। चले, विश यू बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं अब आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल पे खड़े हुए हैं। अगर तो आपका नंबर, अगर आप मार्क्स लेते हैं 1, 2 और 3, तो अभी आइल्स की तैयारी आपको नहीं करनी। ठीक है, अभी आपको स्पोकन इंग्लिश में जाना है। एक आपके कम से कम इसमें आने चाहिए, कम से कम 6 नंबर। लिसन एंड आंसर क्वेश्चन 1 to 4. An answer sheet. Give you the best possible service. Sure. Personal details. So can I check you'll be very happy with the service? You will see that there is an example. Service you receive here.
My name's Carl Rogers and I'm one of the doctors here. In a second time. Talk about why. And answer questions 5 to 10. On 100. I'll just correct that. Full name is Julie Ann Gutt, the Total Health Clinic. Will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hi, come and take a seat. Thank you. My name's Carl Rogers and I'm one of the doctors here at the Total Health Clinic. So I understand this is your first visit to the clinic. Yes, it is. Okay. Well, I hope you'll be very happy with the service you receive here. So if it's all right with you, I'll take a few details to help me give you the best possible service. Sure. So can I check, first of all, that we have the correct personal details for you? So your full name is Julie Ann Garcia. That's correct. Perfect. And can I have a contact phone number? It's 219-442-9785. Okay, and then can I just check that we have the correct date of birth? October 10th, 1992. Oh, I actually have 1991. I'll just correct that now. Right, so that's all good. Now I just need a few more personal details. Do you have an occupation, either full-time or part-time? Yes, I work full-time in Esterhazy's, the restaurant chain. I started off as a waitress there a few years ago, and I'm a manager now. Oh, I know them. Yeah, they're down on 114th Street, aren't they? That's right. Yeah, I've been there a few times. I just love their salads. That's good to hear. Right, so one more thing I need to know before we talk about why you're here, Julie, and that's the name of your insurance company. It's Cawley Life Insurance. That's CAWLEY. Excellent. Thank you so much. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. Now, Julie, let's look at how we can help you. So tell me a little about what brought you here today. Well, I've been getting a pain in my knee, the left one. Not very serious at first, but it's gotten worse. So I thought I ought to see someone about it. That's certainly the right decision. So how long have you been aware of this pain? Is it just a few days or is it longer than that? Longer. It's been worse for the last couple of days, but it's 3 weeks since I first noticed it. It came on quite gradually, though, so I kind of ignored it at first. And have you taken any medication yourself or treated it in any way? Yeah, I've been taking medication to deal with the pain, Tylenol, and that works okay for a few hours, but I don't like to keep taking it. Okay. And what about heat treatment? Have you tried applying heat at all? No, but I have been using ice on it for the last few days. And does that seem to help the pain at all? A little, yes. Good. Now, you look as if you're quite fit normally. I am, yes. So do you do any sport on a regular basis? Yes, I play a lot of tennis. I belong to a club, so I go there a lot. I'm quite competitive, so I enjoy that side of it as well as the exercise, but I haven't gone since this started. Sure. And do you do any other types of exercise? Yeah, I sometimes do a little swimming, but usually just when I'm on vacation. But normally I go running a few times a week, maybe 3 or 4 times. So your legs are getting quite a pounding, but you haven't had any problems up to now? No, not with my legs. I did have an accident last year when I slipped and hurt my shoulder, but that's better now. Excellent. And do you have any allergies? No, none that I'm aware of. And do you take any medication on a regular basis? Well, I take vitamins, but that's all. I'm generally very healthy. Okay. Well, let's have a closer look and see what might be causing this problem. If you can just get up. अच्छा, ये बेटा जो आपने टेस्ट किया इसमें आपने पहले मैंने मेरी गाइडलाइंस को थोड़ा सा भी सुना ना?
उसके बाद आपने किया, तो अब आप देखें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, स्कोर बताइए अपना। स्पेलिंग चेक करें, एक स्पेलिंग भी गलत हो गई, एक 9, वेरी गुड, 9, 10, 8, 9, 8, 7, 9। जिसके कम आए वो भी लिखे ईमानदारी से, आपके सिर्फ मुझे देखने में नाम नहीं लिखना, मुझे पता तो चले मेरा स्टूडेंट कहाँ पर है। 7, 9, 6, 7, सारे अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। 6, 7, 8, 9, 10 पर आने। 6, ठीक है, 6, 7, 8, 5, 5 में से 5 आ गए, जबरदस्त, 5 सुने, 5 में सही। चल अच्छा, अब मैं कोई गाइडलाइन नहीं दे रहा, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, अचानक से पेपर सामने आ रहा है, बिल्कुल वो माहौल है जो पेपर में हो। पेपर आया अचानक से, ठीक है, चले, पेपर अचानक से आएगा और शुरू हो जाएगा। It's in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes. अच्छा देखिए, जब पेपर आता है ना, तो पेपर में इतना टाइम होता है आपके पास कि इस तरह से रिकॉर्डिंग चलती है। Test 3. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Through to the right person. Will be played first. Sometime Customer services manager. Hello, Flanders. In the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listened, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. अभी आपके पास 15 सेकंड्स है, आप इसको देख लीजिए, मैं नहीं गाइड कर रहा क्या लिखना है, खुद फैसला करो क्या लिखना है। You have 15 seconds to look question 1 to 5, and then you will have some time to look at 6 to 10. अब आएगा सही स्कोर सामने। Hello, Flanders Conference Hotel. Oh, hi. I wanted to ask about conference facilities at the hotel. Have I come through to the right person? You have. I'm the customer services manager. My name's Angela. So how can I help you? Well, I'm calling from Barrett and Stanson's. We're a medical company based in Perth. Oh, yes. And we're organising a conference for our clients to be held in Sydney. It'll be held over 2 days, and we're expecting about 50 or 60 people. When were you thinking of having it? Sometime early next year, like the end of January. It'd have to be a weekend. Let me see. Our conference facilities are already booked for the weekend beginning January the 28th. We could do the first weekend in February. How about January the 21st? I'm afraid that's booked too. Well, let's go for the February date then. So that's the weekend beginning the 4th. Okay. Now, can you tell me a bit about what conference facilities you have? Sure. So for talks and presentations, we have the Tesla room. Sorry? Tesla, that's spelled Tesla. It holds up to 100 people
and it's fully equipped with a projector and so on. How about a microphone? Yes, that'll be all set up ready for you. And there'll be one that members of the audience can use too, for questions if necessary. Fine. And we'll also need some sort of open area where people can sit and have a cup of coffee. And we'd like to have an exhibition of our products and services there as well. So that'll need to be quite a big space. That's fine. There's a central atrium with all those facilities, and you can come before the conference starts if you want to set everything up. Great. And I presume there's Wi-Fi? Oh, yes. That's free and available throughout the hotel. Okay. Would you also like us to provide a buffet lunch? We can do a 2-course meal with a number of different options. What sort of price are we looking at for that? Well, I can send you a copy of the standard menu. That's $45 per person. Or you can have the special for $25 more. I think the standard should be okay, but yes, send me the menu. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 6 to 10. Now listen and answer questions 6 to 10. Now, we're also going to need accommodation on the Saturday night for some of the participants. I'm not sure how many, but probably about 25. So what do you charge for a room? Well, for conference attendees, we have a 25% reduction. So we can offer you rooms at $135. Normally, a standard room's $180. And does that include breakfast? Sure. And of course, guests can also make use of all the other facilities at the hotel. So we've got a spa where you can get massages and facials and so on. And there's a pool up on the roof for the use of guests. Oh, great. Now, what about transport links? The hotel's downtown, isn't it? Yes, it's about 12 kilometres from the airport, but there's a complimentary shuttle bus for guests. And it's only about 10 minutes walk from the central railway station. Okay. Now, I don't know Sydney very well. Can you just give me an idea of the location of the hotel? Well, it's downtown on Wilby Street. That's quite a small street, and it's not very far from the sea. And of course, if the conference attendees want to go out on the Saturday evening, there's a huge choice of places to eat. Then, if they want to make a night of it, they can go on to one of the clubs in the area. There are a great many to choose from. Okay. So if we go ahead with this, can you give me some information about how much we're looking at? अब पता चलेगा कहाँ खड़े हैं। बताइए मुझे, अब स्कोर बताइए। 10 out of 10 वाले अब आइए सामने। 10 out of 10। इतनी खामोशी क्यों है? माशाल्लाह, मरियम ताहिर 10 out of 10, वेरी गुड। 8, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 7, 6, 6, 8। अच्छा, अभी का असाइनमेंट सुनिए, अभी सोना नहीं है, जाना नहीं है कहीं। हो सकता है वॉइस क्वालिटी में वो बात ना हो जो बात अभी आपको जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा उसमें हो। मैं आपको इसी का लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, बुक 14 का मैं 1, 2, 3 पूरे भेज रहा हूँ। आप बुक 14 का सेक्शन 1 टेस्ट 4 अभी के अभी करें, उठने से पहले, मोबाइल नीचे रखने से पहले आप चेक करें आपके पास
मोबाइल फोन पर आ गया है। देखिए आया नहीं आया, अब चेक करें, अब देखें ये आ गया, चेक कर लें। लिसनिंग का मैंने ये पार्ट 4 बुक 11 14 है, 14 ट्राई करें, जल्दी से ट्राई करें। आप क्लिक करेंगे बुक 14 के ऊपर, थोड़ा उसको आगे कीजिएगा, आगे जा करके टेस्ट स्कोर, और मुझे आंसर भेजिए, मुझे अपना स्कोर भेजिएगा। सर 10 आउट ऑफ 10 आ गए, सर जी 10 आउट ऑफ 10 आ गए। क्योंकि वो जो वॉइस क्वालिटी जूम पर आती है, वो वॉइस क्वालिटी आपको यहाँ पर मिलने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि आप जरा ट्राई कीजिए और मुझे बताइए टेस्ट स्कोर में कितने मार्क्स आए। ठीक है, बर्जिया आपके पास आ गया, ये लीजिए। दिल छोटा ना करे, अभी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप, तो आपके पास भी आ जाएगा। चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुक 14 टेस्ट 4 सेक्शन 1।